प्यारे दर्शकगण, इस धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और अभी आप देख रहे थे इस्कॉन फिनिक्स के कुछ दृश्य, सीधा प्रसारित दृश्य, जहां पे किस तरह से कृष्ण भक्त कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन किए जा रहे हैं और वहां पे हमारी सहयोगी वेदिता ने आपको काफी कुछ जानकारियां दी है। एक बार फिर से हम वापस आते हैं हमारे एमबीसी स्टूडियो में और यहाँ पर भी कृष्ण भक्त आए हुए हैं आप लोगों को रास लीला में शामिल करने के लिए। बहुत सारे नृत्य होंगे, भजन कीर्तन होंगे और सुंदर नाटक भी हमको देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना समय गवाते हुए इस्कॉन फिनिक्स के प्रधान श्री रघुनाथ दास जी आए हुए हैं आप लोगों को संदेश सुनाने के लिए। वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से आप सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। फ़र्क इतना है कि हर साल बड़े पैमाने में मनाया जाता है, लेकिन इस साल मारामारी के कारण से श्री कृष्ण जन्माष्टमी कन्फाइनमेंट में ही मना रहे हैं। और आप लोग अपने घर बैठे श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना पा रहे हैं एम्बेसी के सहयोग से। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति मामेति सो अर्जुना। मतलब भगवान श्री कृष्ण की जो जन्म है और उनकी जो कर्म है वो अलौकिक है, हम और आप जैसे नहीं है। इस संसार में हम लोग जन्म लेते हैं, बुढ़ापा की अवस्था को प्राप्त करते हैं, बीमारी से ग्रस्त होते हैं और अंत तो गत्वा हम लोगों की मृत्यु हो जाती है। परंतु भगवान की जन्म, कर्म और उसका फिर से अपने धाम सिधारना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भगवान कहते हैं कि ना तद भाषते सूर्यो ना सशंको न पावकः। उनके धाम में किसी भी प्रकार का सूर्य और चंद्रमा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उनका धाम चिन्मय है और वे इस संसार में अवतार लेते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं हम लोगों को यही संदेश देने के लिए कि उनके धाम वापस जाना है। भगवान आते हैं हम लोगों को ये संदेश देने के लिए कि उनके शरण में आने मात्र से फिर हम लोग उनके धाम वापस जा सकते हैं। कहते हैं कि त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा, मतलब जब हम लोग इस संसार में उनके जो कार्यकलाप हैं, उनके जो लीला है, जब इसको तत्व से समझ आते हैं, जब हम लोग इस शरीर को त्यागेंगे फिर उनके भगवत धाम वापस लौट जाएंगे। फिर इस संसार में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। क्यों संसार में दोबारा नहीं आना पड़ेगा? क्योंकि ये संसार दुखों का आलय है, यहाँ कष्ट ही कष्ट है। भगवान का जो धाम है वो शाश्वत है और जिस लोक में हम लोग रह रहे हैं वो भौतिक है, क्षण भंगुर है। भगवान के धाम में प्रेम है और यहाँ पर द्वेष है। यहाँ पर कष्ट है, भगवान के धाम में आनंद है। यहाँ पर मृत्यु है और वहाँ पर जीवन है। हमारे परम आचार्य प्रभुपाद जी, जो इस संस्था के संस्थापक आचार्य है, वे मॉरिशस भी आए थे 1975 में। पूरी यात्रा करने के बाद उन्होंने ये निर्णय दिया कि ये मॉरिशस जो है बहुत ही सुंदर टापू है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने एक भविष्यवाणी किए थे मॉरिशस के प्रति। उन्होंने कहा था कि मॉरिशस विल बिकम द फर्स्ट कृष्णा कॉन्शियस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ के मॉरिशस वासी कृष्ण आंदोलन को स्वीकार कर रहे हैं और यही वजह है कि
हरे कृष्णा लैन इस्कॉन फेनिक्स में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और ये मंदिर का जो उद्देश्य है बहुत ही रोचक है। मंदिर जो बन रहा है बहुत ही विशाल मंदिर, और आप लोगों की जानकारी के लिए दिसंबर के अंत में, इस साल के दिसंबर के अंत में मंदिर का जो सुपर स्ट्रक्चर है वो समाप्त हो जाएगी और अगले साल फिर जो बारीक काम जो रह जाएगा, इसको कहते हैं ना फिनिशिंग वर्क, वो तकरीबन 2 साल लगेगा। तो इस मंदिर को पूरा करने में आप सबका सहयोग की खास आवश्यकता है। मैं रघुनाथ दास इस मंदिर का अध्यक्ष होने के नाते आप सभी धर्म प्रेमियों से, सभी मॉरिशस भाई बहनों से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इस मंदिर का निर्माण में सहयोग दीजिए। शास्त्र कहता है जो व्यक्ति मंदिर बनाने में मदद करता है तो वो व्यक्ति का जो पूर्वज और उसका जो परिवार है सबको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। और ऐसा सुनहरा मौका बार बार नहीं आता है। जीवन में एक ही बार ये अपॉर्चुनिटी आता है। ये भव्य मंदिर बार बार नहीं बनेगा, एक बार बन गया सो बन गया। तो आपको यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आप लोग ये निर्णय लीजिए कि ये मंदिर जो है ये आपका मंदिर है। ये मंदिर का उद्देश्य भागवत गीता, भागवतम, रामायण का प्रचार होता रहेगा इस मंदिर में। कहते हैं कि ये संसार क्षणभंगुर है और जो व्यक्ति भगवत कार्य में लगेगा, भगवान की सेवा के कार्य में लगेगा तो उसका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी यही संदेश हर साल लेकर के आते हैं कि आप भगवान श्री कृष्ण की कार्यकलाप को सुचारू ढंग से समझें। और हमारे परम गुरु प्रभुपाद जी कहा करते थे कि एकमात्र उपाय है भगवान की शरण में आना। शास्त्र कहता है ततश्चनम दिनम धर्मा सत्यम सोचम समादया। आने वाले दिनों में ये जो समस्या जो है वो और बढ़ती जाएगी, वातावरण और भी दूषित हो जाएगा। तो आप सब भक्तों से निवेदन है कि आप लोग कृष्ण आंदोलन को स्वीकार कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। आप सब हिंदू भाई बहनों की जय। शुभ रात्रि। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कृष्ण भक्ति बहुत ही अद्भुत है। चाहे आप नृत्य करें या फिर कीर्तन करें या फिर उसके ध्यान में मग्न हो जाइए। चलिए एक बार फिर से आप लोगों को कृष्ण भक्ति में ले जाते हैं और भक्ति के सागर में डुबा देते हैं। हम भी डूब जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे बहुत ही सुंदर नृत्य कृष्ण बलराम मंदिर बना के से आए हुए भक्तगण। कन्हैया अपनी मैया से निवेदन करते हैं और बोलते हैं, हरी मैया राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से मैया बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। इस पर मैया यशोदा
कन्हैया को क्या उत्तर देती है। वो बोलती है, अरे लाला, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, लाला नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। कन्हैया को अपनी माँ के इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो अपनी मैया को धमकी देते हैं और बोलते हैं, अरे मैया, जो नहीं ब्याह कराए, तेरी गैया नहीं चराए। जो नहीं प्यार कराए, तेरी गैया नाच चराओ। आज के बाद मेरी मैया मेरे कहने पर ना आओ। आज के बाद मेरी मैया मैया तेरी दहली पर ना आए। आएगा रे बजा, अब जीत हार का। राधिका, छोरी से, बीरज की छोरी से, मैया करा दे मेरू प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरू प्यार। राधे गाएंगे राधे। कन्हैया की इन धमकियों का उनकी मैया पर कोई असर नहीं होता। वो अपनी मैया को जरा प्यार से समझाते हैं। बोलते हैं, अरे मैया, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा, वो बनवाऊंगा छप्पन प्रकार के। राधिका, छोरी से, बीरज की छोरी से, मैया मैया करा दे मेरू प्यार। कन्हैया के बाल हट के आगे मैया यशोदा अपनी जिद छोड़ देती है और बोलती है, अरे लाला, राधिका गोरी से, बीरज की छोरी से, कान्हा करा दूं तेरो ब्याह। राधिका छोरी से, बीरज की छोरी से, लल्ला कान्हा करा दूं तेरू प्यार। कान्हा करा दूं तेरो ब्याह। कान्हा करा दूं तेरू प्यार। लाला करा दूं तेरो ब्याह। जय हो, आप सबकी तालियों के साथ राधे। सभी साथ में गाएंगे। जय हो, जय हो। वो राधे रानी की जय, गाइए। महारानी की जय। राधे रानी की जय, महारानी की जय। वो राधे रानी की जय, महारानी की जय। राधे रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाले की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाले की जय जय जय। ओ राधे रानी की जय, महारानी की जय। राधे रानी की जय, महारानी की जय। ओ राधे रानी की जय, महारानी की जय। राधे रानी की जय, महारानी की जय। बोलो वीरन कुमारी की जय जय जय। बोलो धीरज कुमारी की जय जय जय। बोलो वीरन कुमारी की जय जय जय।
रानी की जय महारानी की जय राधे रानी की जय महारानी की जय राधे रानी की जय महारानी की भक्ति के कई रूप होते हैं, चाहे आप नृत्य करें या फिर आप कीर्तन भजन करें या फिर खुद भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाए। लेकिन आजकल के ज़माने में जहाँ पे हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जहाँ पे हाथ में मोबाइल फ़ोन है, घर पर टेलीविज़न है, तो टेलीविज़न के ज़रिए हम भगवान के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। उसको हम दृश्य भक्ति कहते हैं। चलिए, दृश्य भक्ति के माध्यम से आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर मूवी दिखाएंगे, फिल्म दिखाएंगे, जहां पे कृष्ण की लीला हम देख पाएंगे इस मूवी में। Glories to the king of Mathura. Welcome, my dear friend Uddhav. What happened, Keshav? Every time I address you as the king instead of a friend, you do not like it. But today, you didn't say anything. Is there anything bothering you? Oh, Uddhav, you have no idea how much I'm missing Vrindavan. Over there, my mornings would start with the beautiful tunes that Yashoda Maiya used to sing while churning the makhan. My days would be filled by fun games with my sakhas. My evenings would not be complete without the cows and the calves. And if I don't steal makhan from the gopis Uddhav, I wouldn't be able to sleep at night. There's one thing hard for me to digest. You, Krishna, the Supreme Personality of Godhead. What do you lack? The whole universe can bow down to you if you so desire. You can have everything you want at any time. How can you feel so sad and incomplete? You are an excellent and a very obedient disciple of your Guru Uddhav. But this, even being Bhagavan, I cannot explain to you. How is this possible? I don't get it. You know, go to Vrindavan right now. My dear Lord, I'm but an instrument. You're the musician. Use me in your service as you wish. Tell me, how can I be at your service by going there? When you go there, give my message to all the Brajavasis and try to get the news of everyone. Give assurance to Maya and Baba that everything is fine here and I'm remembering them. As you wish, my Lord.
But remember one thing, Uddhav. Try to explain anything to anyone. Do not try to convince the gopis. All right. However knowledgeable you can be, in front of them, nothing works. Yes, my lord. Now go, handsome. Go fast. Yes, my lord. यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। Yashoda? Yashoda, you have made enough makhan for today. Why are you making some more? Are you making this for my Kanha? Yashoda, every day you do this. And then, when Krishna does not come, the whole pot of makhan goes to waste. But what if my Krishna comes today and he is hungry? From where will I bring Makhan? Should I leave him hungry? It seems someone has come. Do you think it's our Kanha? Kana? My Kana has come. Is this the house of Nanda Maharaj? Yes? Who are you? You look a lot like my Krishna. Oh, I'm Uddhav, a friend of Krishna, and have brought his message from Mathura. Nand Maharaj, look who has come. Krishna's friend all the way from Mathura. Please come. Uddhav, please come inside. Please come and have a seat. Abhay, go and fetch a glass of water and get everyone to prepare different variety of food for Uddhav. Uddhav, tell me, how can I serve you? Oh no, please don't do anything special. Just consider me as your own son. Please tell us, how is my Kanha? I hope everything is fine over there. Does he get proper food to eat? I hope he doesn't lack anything. Does he think about us? Does he remember us? Yes, he always talks about you. Even having the royal comfort, he always feels incomplete without Vrindavan. Oh, my son Kanha. I wonder how he is living without us. How he is having to take the burden of such a huge kingdom on his soft shoulders. Oh, please do not lament, dear mother. Why are you so concerned about him? He is Krishna. That Krishna who defeated the powerful Kans and his demonic friends. He was born to destroy the lineage of Asuras. You remember when Devaki Mata and Vasudev Baba during their wedding ceremony? There was a prophecy from the sky. Do you remember? My dear sister Devaki, I am so happy today to see you getting married. I am so happy that I, the king of Mathura, the ruler of the free worlds, will be your charioteer today. Kans, oh foolish Kans, you have been very sinful. You have been an oppressive king.
but your atrocities are about to come to an end. The one to kill you is none other than the eighth son of your own sister, Devki. What? My killer? The son of my own sister? Huh. No. No, 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 no. I will not let this happen. Huh. But what if I stop his birth? Then I will become immortal. Devki, I will not let you give birth to my destroyer. And that will only be possible by killing you! Stop, Kans. Please don't do this. She's your sister. Move away, Vasudev, or else I will kill you too. Nobody can stop me from becoming immortal today. I have a solution for this. I promise you that I will give all my children as soon as they are born. And then you decide. But please, leave Devki. Don't kill her. Really? You do this for me? But what if you keep the eighth child from me? No, I won't let this happen. Gods, arrest them! And after he imprisoned them, Kans heartlessly killed 6 newborn babies. And then, with his power of Maya, Krishna transferred the 7th child from the womb of Devki Mata to the womb of Rohini Mata. That child was Balaram. And then, finally came the time for the 8th child. No, I will not let this happen. I will not give my 8th child to that ruthless demon. Oh, Devki, I can understand your pain completely. But I have promised Kans that I will give him all my children. If I did not do that, he would have killed you. And then the Akashvani would not have been true. For it to fulfill, I had to save you. Have faith in Lord Narayan. He must have planned something to fulfill this prophecy. Hey Prabhu, how unfortunate I am. My 6 babies, my own babies, have been killed in front of my eyes by that sinful Kans. Are these kind of immorality and adharma going to keep happening? Hey Prabhu, is the beautiful world of yours going to be filled by such demonic people? Is it the only fate of this world? Dear Mother, please don't worry. Every time there is injustice in this world, I give the wrongdoers many opportunities to come back to the right path. But when their sins rise above limits, then I take a form in this world to protect my devotees and deliver those sinful people. And this time, as you are both very dedicated to me, I will personally come as your 8th child. And on the day he appeared, everyone fell unconscious by his Maya. And Vasudeva Maharaj brought him to Nandagaon during the night and went back. You see, that is Krishna, the one who has come for the benefit of everyone. He is the creator, he is the maintainer, and he is the destroyer. And you're worried about him? You have to worship him.
There's no need to worry about him. You're telling us to worship him and not worry about him? That Krishna who played in my lap, who spent his childhood in front of my eyes, for whom I would make makhan every day. And not only my makhan, he would even steal makhan from other gopis. You know what happened one day? Come, there's no one inside. Let's find the pot of makhan. I can't find any makhan, Kana. It seemed they hid it very well this time. Don't worry, Dao. It must be somewhere here. There it is. How are we going to reach it? It's too high. Look at this. Achoo! What are you doing, Kanha? Pravavati Mata, nothing. I was just stealing your delicious makhan. You think you are so clever and Yashoda won't know about it? How will she know? You will tell her like last time. And remember what happened last time? And like last time, again she won't believe you because she loves me and listens only to me. Really? Maya, you? I was doing nothing. My sakhas are forcing me to. Don't see any Saka here. Maya, don't listen to her. I was just searching for a calf. Yes, a gaya. Calf? A big calf in this small pot? Yes, Maya. This calf. You were searching for a calf and you have got makhan on your face? Krishna, every day I am making makhan for you so that you go and steal from other people's place. What will these people say about you? When they come and complains about you, it hurts me a lot. I don't like it when they say bad things about my Kanha. And you are always being naughty. All right, Maya. I promise that I will not eat makhan unless it's made from sweet, soft hands of my Maya. What do you think, Gaya? Will Maya talk with me? I may believe that my Kanha is the creator and is present everywhere. But this calf, will you be able to explain this to it? Will you be able to pacify every dust of Vrindavan on which my Kanha's soft lotus feet were put?
I'm wordless. How is this possible? That the Supreme God, the Creator Himself, is lying? Just because He's afraid of being caught for His mischief? The one whom even fear personified would fear is trembling, seeing His own devotee in the form of His mother, angry with Him? You cannot even imagine, Uddhav, how painful it is to separate from Kanha. And not only us, the whole Vrindavan is drowned in sorrow. We can only wish that wherever our Kanha is, he is in a good health and he is happy. All I can say that he is well off and in good health, but still, he's always missing you all. And Vrindavan is all he thinks about. That's why he sent me to Vrindavan, so that I can share his message with you. I also have to share his message to the other Vrajavasis. Sure, Uddhav. But before you can take lunch with us, and then you can continue your journey. Oh, no. Please, do not take the trouble. Uddhav, you're just like our Kanha. It's not a problem for us. Please come inside. I have met all the Vrajavasis, and the mood of service and affection they all have for Krishna is never to be seen. But there's one thing I still haven't understood. Why did Krishna say, "Go handsome"? Oh dear tree, where has our Kanha gone? Oh dear Parvat, we were engaged in serving our dearmost Kanha. And now he's gone. He is to be blamed. Everything was fine here. I don't know why he chose to go away. Dear Mother Earth, this is the soil on which Muridhar has put his lotus feet. I could live my whole life serving this soil. Until now, I have seen everyone in the deepest sorrow, in separation from Sri Krishna. But who are these girls? They are literally talking to objects. This is a whole new level of separation. Stop! Where are you going? Who are you? It seems that you've come from Mathura. You have snatched our Kanha. Now what do you want to snatch? What's left in this body now? You have already robbed our soul. Listen, wait. Go, handsome. Go away from here. Who said this? She did. It seems that you were happy with our service. But now, why have you come here as a honeybee? Are you trying to touch my feet and ask for forgiveness? Go away from here. I don't want to talk to you. Now I understand why Keshav told me this. She's the one. She's Radha. Keshav? Radha? How do you know them? My Manmohan Krishna has come. Radhika, this is not Kanha. He just looks a little bit like him, but he seems to be like an imposter. Kanha has come, but in the form of a message. Yes. Oh dear gopis, know me to be Uddhav, the minister and messenger of our graceful King Krishna, and I have brought his message for all of you. Really? Why didn't you tell us that earlier? You're the most welcome in our Vrindavan. Please sit here.
Yes, when is he coming? Has he already come? Where is he? Oh, no. He only sent a message. Only a message? Does it mean that he won't come again? He must be really enjoying all the glamour of this royal palace. Yes, new place, new people, lot of servitors. He must be really happy. You know, when he was in Vrindavan, he would be happy with simple things. Yes, and when he would be happy, he would play his flute. Oh, yes. And when we would hear his flute, we would all leave our house, family, husband, kids, and everything just to come and try to serve him. Welcome, dear ladies. You are being awaited. I feel very honored by your presence here. Ladies, why are you speaking to us like a stranger, Kanha? Oh, no. You're no stranger. You all are very nice people. And I would like to thank you all for coming here to meet me today. But now, you all can go back home. Why should we go? We came here to serve you, Kanha. But it's very late. Your family will be worried about you. What will your Pati Parmeshwar and kids do without you? Oh, Krishna, everyone knows that our husbands are all different forms of yours. If you're satisfied, everyone is satisfied. But it's inappropriate. It's adharma. You are the master of creation. Dharma comes from you. So serving you is the topmost dharma for everyone. Stop it, Sakhis. If he desires that we leave from here and go back home, this is what we should do. But what about your desire to serve him, Radhika? My existence is for serving him and for him to be happy. This is all I wish for. Yes, you're right. Let's return back. Stop! Are you all taking me seriously? I was just joking. How can I be happy without my dearmost devotees? Please, come back. Oh, Kanha, why do you do that to us? Because it's written on your forehead, Kanha, come and fool us. Wait. Tell me one thing. I'm always annoying you all, yet you are all coming back to me again and again. Why are you all so dedicated to me? You are all breaking the rules and regulations of the society, not caring about being defamed, just to serve me. What is there in serving me that you all are so devoted to me? I don't get it. If you really want to know, play your flute and we'll tell you. मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्
मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरुणं मधुरं हरिणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् Wow! I'm amazed by your dedication. I came here thinking to pacify you all. But how can I pacify one for losing the basic reason for which they are alive? I wanted to leave his message, but I'm being left speechless. Oh, yes. We are just so lost in his thoughts that we almost forgot about his message. Tell us. He must be happy. He is the king of Mathura. What is there that he might lack? He has all the wealth and comfort of this world. What could he need more? If he is happy, that's all we want. No, he is not. He is not happy. How can he be happy without his dearmost devotees? He is incomplete without you. Vrindavan is all he thinks about. Oh, Krishna! You're also missing us? You're so merciful. Everyone in this universe surrenders to Krishna or his other forms so that they themselves could get some happiness. And that Krishna has taken the most precious thing you all had, the opportunity to serve him more. And he left you in deep sorrow. And yet, you're wishing for his happiness? Now I understand why Krishna sent me to Vrindavan. I thought my devotion to Krishna was great, but I can't express how insignificant I feel in front of you all. I can only wish, if ever I have to take birth again, I take birth as a mere blade of grass on the soft soil of Vrindavan, on which the foot dust of the Vraj Gopis could fall on. The residents of Vrindavan who are serving Sri Krishna spontaneously have inconceivably high level of devotion for the Supreme Lord. They had all been followers of the Vedas. The Gopis are not ordinary ladies at all. During the time of Lord Ramchandra, the Gopis were themselves great Vedic scholars and sages who performed sincere austerities to be able to serve the Lord with full surrender. Lakshmi Sahasrashata Sambrama Sevyamanam.
Brahma Samhita explains that gopis are the hundreds of thousands of Lakshmis serving the Lord in Goloka Vrindavan Dham, the spiritual world. Goloka Academy is trying to present the pure devotional service attitude given by Srila Prabhupada, which is beyond our understanding in this material world. श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जहाँ पे मनुष्य को अपने जीवन जीने का सही मार्ग दिखाता है। किस तरह से हम अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, अपने कर्म का पालन कर सकते हैं और भक्ति के राह पर चल सकते हैं। गीता के श्लोक हमको यही सिखाता है। तो चलिए बनाके के गुरुकुल के प्यारे भक्त आए हुए, छोटे छोटे भक्त आए हुए आप लोगों को श्लोक सुनाने के लिए। चलिए साथ में सुनते हैं। Hare Krishna, Bhagavad Gita, Chapter 1, Text 5. Drishtaketu Chakita Nam Kashi Rajascha Viryavan Purujit Kunti Bhojascha Shaibhyascha Narapungavaha. Translation: There are also great heroic powerful fighters like Drishtaketu, Chakitan, Kashiraj, Purujit, Kunti Bhoj and Shaibhya. Hare Krishna. Hare Krishna, Bhagavad Gita, Chapter 2, Verse 32. Yadrichaha kapapanam sargavaram apapritam sukhinaha kshatriya partha labante yudam idrisham. Hare Krishna. Hare Krishna, Bhagavad Gita, Chapter 2, Text 40. Neha Bikramana sosti patravayu na vidyate swa alpamapi hasya dharmasya trayate mahato bhayat. Translation: In this endeavor there is no loss or diminution. Just a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. Hare Krishna. कहते हैं कि बच्चों के हृदय में खुद भगवान वास करते हैं। जो भी कुछ वे बोलते हैं, जो भी कुछ वे सोचते हैं, बस भगवान के ही इशारे होते हैं। अभी चलिए आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर नृत्य और श्लोक रेसिटेशन आप लोगों को दिखाएंगे। किस तरह से प्यारे छोटे छोटे भक्तगण भगवान की लीला में लीन हो जाते हैं और आप लोगों को यह सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत करे हैं। साथ मिलकर देखते हैं। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवंश्च श्रीरूपं सागजातं सहगना रघुनाथं हितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगना रघुता श्रीविशाखान्वितांश्च वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
विद्यते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। Chubby cheek, dimple chin, rosy lip, bluish skin, curly hair, very rare, eyes are blue, lovely too. Yashoda's pet, is that you? Yes, yes, yes. Hare Krishna. Tam kita taka tattodanga takkutta dim 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 kita taka tattodanga dikkutta tam 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 kita taka tattodanga takkutta dim 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 kita taka tattodanga dikkutta tam 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 kita taka tattodanga takkutta dim 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 kita taka tattodanga dikkutta tam 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 kita taka tattodanga takkutta dim 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 kita taka tattodanga dikkutta tam 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 kita taka tattodanga takkutta dim 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 kita taka tattodanga dikkutta tam 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 kita taka tattodanga takkutta Tom tom takatarita dhim tajhanudi. Tom tom takatarita dhim tajhanudi. Tajham takita jhana tajham takita jhana tajham 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 takita jhana tajham नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्त्रये अमृत कलश हस्ताय सर्वामय
विनाशनाय त्रैलोक्य नाथाय श्री विष्णवे नमः श्री विष्णवे नमः श्री विष्णवे नमः। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुता मानी जय गोपीगण राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। ओ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुता मानी जय गोपीगण मेरो एक प्राण दाना एका ही है जीवन नंद नंदन मदन मोहन राधिका रमन ओ नंदा नंदन मदन मोहन राधिका रमन। ओ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुता मानी जय गोपीगण रसिका मुकुता मानी जय गोपीगण श्याम ही सो मेरो प्यारा श्याम ही मेरो भरता श्याम ही सो मायो आथो यामतान मन श्याम ही सो मायो आथो यामतान मन।